Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday at 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. And today is 23rd February. I'm here with the Hindu analysis of 23rd February. That is Thursday. आज 23 फरवरी थर्सडे है और हम आपके सामने मौजूद हैं द हिंदू एनालिसिस लेके. सो एम आई ऑडिबल गाइज? अगर आवाज आ रही है तो एक बार लिख देना राइट यस सर यू आर ऑडिबल. So these are the two important articles on the first page of the Hindu newspaper. Here this one says Supreme Court refuses to stay Election Commission order giving Sena name to Shinde. And this is another article. India remains a bright spot to contribute 15% of global growth in 2023, says IMF. International Monetary Fund says this. Okay. So these are the two important articles. We will be discussing it on the first page. Am I audible? आवाज आ रही है? Okay. Let's discuss this article. I hope you are aware, yesterday we discussed this in yesterday's class that Supreme Court to hear Uddhav Thackeray's plea against EC's order today. See, and we have discussed the background, but still I'll be telling you something. कुछ थोड़ा सा बता देते हैं. See, I hope you are aware, actually this is Shiv Sena, which is a very famous political party from Maharashtra, founded by Mr. Balasaheb Thackeray. Okay, so after his death, Mr. Uddhav Thackeray became the head of Shiv Sena, and in fact, he was the chief minister of Maharashtra from November 2019 to June 2022. Okay, and after that, actually, the split happened within the Shiv Sena, and after that, Eknath Shinde took the charge and he became the chief minister and all, with alliance from BJP. I hope you are aware of that on 30th June last year. So after that, actually there was a clash between, Uddhav Thackeray section and Mr. Eknath Shinde faction, that who is the real Shiv Sena. So this party symbol should be given to whom? Mr. Uddhav Thackeray or Mr. Eknath Shinde? What is the right answer? So actually, the election commission decided actually that Mr. Eknath Shinde is the real Shiv Sena, and the symbol was actually allotted to Mr. Eknath Shinde. Okay, now. So the question is actually Mr. Uddhav Thackeray yesterday challenged this in the Supreme Court and wanted that it should be the order of election commission. This order of election commission should be immediately stayed. तो उन्होंने petition डाला कि Supreme Court जो है election commission के order को immediately stay लगा दिए. But Supreme Court said we are not going to, SC dismisses fear that EC's order will have an impact on properties, etc., and has given 2 weeks to Shinde and poll panel to file the response. So the CGI said we cannot pass an order which has the effect of staying EC order without hearing them. मतलब दूसरे पक्ष को बिना सुने हम order नहीं pass करेंगे. Yes, I think this is actually one of the principle of natural justice, है ना? Listen to the other side before passing a judgment. आपने सुना होगा principle of natural justice का part है. So the Chief Justice said we will listen to the side or opinion of Election Commission of India and Eknath Shinde camp, because Election Commission decided this. So let's hear their opinion also कि क्यों उन्होंने ऐसा decide किया. उसके बाद अगर stay लगाना है नहीं लगाना है decide करेंगे. Okay, and then Eknath Shinde camp also. So they will be, they'll be listening to both the parties before taking any decision. That is what the Chief Justice of India said. ठीक है. So that is what actually it was in the news. इसका पढ़ लेना. We have already told a lot of things. The second is on the first page, there was another article. India remains a bright spot to contribute 15% of global growth in 2023, says IMF, International Monetary Fund. International Monetary Fund. So where is the headquarter of IMF? Can anyone tell me? कोई बता सकता है? IMF का headquarter कहाँ है? Yes, जोया खान, आपने कुछ हद तक सही बताया. एक्चुअली एक स्टेटमेंट होता है लैटिन में, ऑडी अल्टरम पार्टम, है ना? अल्टरम पार्टम. आई थिंक दिस इज द स्पेलिंग, थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे हो, बट दिस इज द स्पेलिंग व्हिच मींस लिसन टू द अदर साइड बिफोर पासिंग अ जजमेंट, है ना? लिसन टू द अदर साइड बिफोर पासिंग अ जजमेंट, है ना? मतलब दूसरे पक्ष का सुनने के बाद ही आप फैसला सुनाइए. यस, दैट्स वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट? हाँ, ओके. Now let's move on. हाँ, IMF का headquarter कहाँ है? So yes, someone has answered. Zoya Khan, DC. Yes, Washington DC. Write it completely. Yes. Priya Chavan, very good. Washington DC is the headquarter of IMF. Washington DC is the capital of USA. In fact, you will find the World Bank headquartered in the same place, है ना? IMF और World Bank दोनों का headquarter
वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा. Yes, Zoya Khan, Zunaira Qureshi, Priya, you all are right. Yes, so this is actually the IMF has predicted. So this will be something the growth of India. So if you see the global growth, global growth का मतलब है पूरे वर्ल्ड का ग्रोथ जो है 3.4% 2022 दिखा रहे हैं और 2023 में 2.9% दिखा रहे हैं. ठीक है. Now FY23 means जो ये वाला फिस्कल ईयर में 22-23 में this is the growth 6.8% and 23-24 में 6.1% growth. ठीक है. I have taught in my paid classes what is the meaning of FY24, what is the meaning of Q1 of FY23. ये सब चीज हमने पढ़ा चुके हैं. So those who are my paid batch student must be aware of these terminologies, that how to find out what is FY23, FY24, Q1, Q2, Q3 ये सब मैंने बता दिया है. So you can easily understand, है ना? So this is what IMF has predicted, that in this fiscal year, India's growth would be somewhere around 6.8% and the next fiscal year it would be somewhere around 6.1%. ठीक है. इस fiscal year में 6.8% रहेगा, अगले में 6.1 रहेगा, ऐसा कहा गया है. Yes, ऐसा IMF ने कहा है. ठीक है. Now there are some questions related with IMF. Who is the current managing director of IMF? Your options are Geeta Gopinath, Kristalina Georgieva, Piera Oliver Gorincias, none of the above. Your time starts now. सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन गाइस. वी आर सीइंग 8 likes, 14 is watching, so सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. What is the right answer? Managing director of IMF. Someone has said, sir, deputy managing director is Geeta Gopinath. Yes, Zoya Khan, right? Huh? Priya Chaman, very good, right? So the managing director is actually Miss Kristalina Georgieva, and Geeta Gopinath is first deputy managing director. ठीक है. Deputy MD. ठीक है. And who is Piera Oliver Gorincias? You know, he is chief economist. Chief economist of IMF. ठीक है. Yes, so the right answer is 2. Yes, Vishal, Zunaira, Rashmi Khan, Zoya, Khushi, Ayush, you all are right. B is the right answer. Yes, these three are actually important ones. Kristalina Georgieva is the managing director. Geeta Gopinath, she is from India. I mean Indian origin, and that is why she becomes very, very important. First, a deputy managing director of IMF. Then chief economist is Piera Oliver Gorincias. Just have an idea about it. Yes, India remains a bright spot to contribute 15% of global growth in 2023, says IMF MD. So this has been said by Kristalina Georgieva herself. उन्होंने खुद ये बात कही, तो इसीलिए that is why I have asked this question about Kristalina Georgieva. ठीक है? Okay, so that is what she has said, है ना? So India is contributing 15% to global growth, says IMF managing director Kristalina Georgieva. ठीक है? Okay, yes, I have shown you this, है ना? This is how the growth would be. This fiscal year 6.8%, the next fiscal year 6.1% would be India's growth according to IMF. ये सब कभी-कभी एग्जाम में पूछते हैं. Let's say the upcoming exam is of MHCT, है ना? और CLAT, वो सब एग्जाम में पूछ सकते हैं this question. ठीक है? Okay, before that, guys, there's a small announcement. We are running a CLAT 2024 comprehensive course. The exam is in December, so you are left with hardly 9-10 months. So I would suggest go for this course. 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 plus mock tests, etc. would be provided. If you have query, call on this number. इस पर call कीजिए 9538895678 पर call कर सकते हैं. Yes, this is a free workshop that will be happening on 26 February at 7 PM with Abhimanyu sir. So do join this, and the link is given in the description from where you can join. Now let's talk about these 4 editorials. Protect the power of the little man in a democracy. देखो ये लिटिल मैन किसको कहते हैं? सो जनरली आई मीन दिस लिटिल मैन इज अ टर्म यूज्ड फॉर कॉमन सिटीजंस, है ना? दिस टर्म एक्चुअली वाज यूज्ड बाय विंस्टन चर्चिल एंड ऑल. सो बेसिकली जब हम लोग प्रीएम्बल पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो बेसिकली डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द सिटीजंस पावर, राइट? इट इज सेड कि इन डेमोक्रेसी पावर लाइज विद द सिटीजन, नॉट विद द पॉलिटिकल ऑफिसर्स, है ना? कहते हैं ना कि जनता के पास पावर होता है बिकॉज इट इज द सिटीजन हु कैन वोट whomsoever it wants, है ना? So now Mr. Dushyant Dave is a senior advocate in Supreme Court of India, and he said this, कि the nation may have celebrated Azadi Ka Amrit Mahotsav on completion of 75th years of independence and 74th anniversary, and but he is saying that everything is not fine. And this is according to his opinion. Let me clarify. Whatever I explain is the opinion of the author, not my opinion. ठीक है? So just I am explaining it. There's a deepening divide between rich and poor, precarious condition affect the rule of law, etc. And also he's saying कि disparity is high, means rich and poor divide is high. गरीब काफी गरीब है, अमीर काफी अमीर है.
So that is what he is saying. The nation stands polarized on religious and caste lines. मतलब religion के नाम पर और caste के नाम पर लोग polarized हैं. Means they feel, I mean, not sort of a hatred towards other and all. That is what the author says. There is a polarization on the basis of religion and caste, which is not very good. There is a deep animosity. Animosity मतलब होता है दुश्मनी. Animosity comes from the word enemy, समझ लो. Enmity, animosity are more or less same thing. The party in power, the center, is willing to cede and aims to the opposition to maintain a vibrant democracy, etc. It means the author is saying that means opposition's space is very less right now, and there are a lot of raids, etc. happening and all. So according to the author, बहुत सारे raids वगैरह हो रहे हैं. I mean, a lot of raids are happening against opposition and all. That is what the author has said. The next is with weakened institutions, safeguards and institutions, judiciary, including Supreme Court of India, has been slow to stop these attacks. So he's saying, according to the author, the lot of raids actually happen against opposition and all. That is what he's saying, and because of which even judiciary is not able to stop those and all. तो उनके हिसाब से ये कि opposition पर मतलब raids वगैरह बहुत हुए हैं, तो उसको judiciary भी रोक नहीं पा रही. That is what the author has said. ठीक है. Now he's saying that judiciary needs to innovate to stop luring of elected MLAs. So he's basically talking about defection. कि defection should be stopped. One MLA or MP moving to other party after getting elected is a very bad idea. I mean, this is not a correct idea and all. That is what he has said. And in order to protect the power of little man in a democracy defined by Winston Churchill. So Winston Churchill was a British Prime Minister, and he actually talked about power of little man, matlab common citizens actually power in a democracy. इसको बचाए रखने के लिए. Okay, that is what is being talked about. Then he's talking about 1927 Congress session. पहले की बात कर रहे हैं, before Azadi, before independence, that Madan Mohan Malviya asked Muslims, what safeguards did you ask from the Secretary of State for India or from the government of India? Then Maulana Muhammad Ali came to and embraced Pandit Madan Mohan Malviya and said, I do not want any safeguard. We want to live as Indians as part of Indian body politic and all. मतलब ये है कि मदन मोहन मालवीय जी ने पूछा था आजादी से पहले कि मुस्लिम्स को क्या सेफगार्ड चाहिए यहाँ रहने के लिए. तो मौलाना मोहम्मद अली आए, एम्ब्रेस मतलब होता है गले मिले और कहें कि हम लोग कोई सेफगार्ड नहीं चाहिए, हम लोग इंडियन सोसाइटी के एज अ पार्ट रहना चाहते हैं. दैट इज व्हाट आई मीन ही इज रेफरिंग टू एंड ऑल. सो देन ही इज टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो ही इज कोटिंग जॉर्ज ग्रोट. ये थोड़ा सा आपके लिए टफ है. आई मीन ही इज कोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ठीक है. So given by George Grote and Bhimrao Ambedkar. तो इसी की वो बात करें. ये इतना मैं नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, because this is slightly on a tougher side for you. ठीक है. So that is why I'm not explaining. इतना आपको जाना नहीं constitutional morality concept. Then the author is talking about the only check on the degradation of party system into despotism is the existence of another party and all. So basically he is actually focusing on the importance of opposition in in protecting democracy. Yes. So opposition का बहुत important role होता है, because it raises the voice and all of the common people and all any problem and all. So opposition का there should be a strong opposition. I mean to have a strong democracy and all. That is what he's saying. The Congress, which dominated this country for almost 4 decades, sought to perpetuate its power post independence and by preventing healthy opposition. So even Congress जब थी पहले, especially there are allegations that during the time of Indira Gandhi, she tried to actually suppress the opposition and all. So उस टाइम पे वैसे ही होता था, मतलब उस टाइम पे स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड ऑल कि हेल्दी अपोजिशन को रोका था. मीन द डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट इन अपोजिशन एट स्टेट्स. यस. सो मिसयूज ऑफ आर्टिकल 376 हैपेंड. व्हाट इज आर्टिकल 356 गाइस? कोई बता सकता है? सो 356 आर्टिकल इज रिलेटेड विद व्हाट? सो प्रेसिडेंट रूल. So there are allegations of misuse of this clause by Indira Gandhi government. Many government in the past have misused 356. कई बार ऐसा allegation है. So this is an allegation that in the past also the government has misused Article 356 imposing opposition rule and all. फिर बाद में Supreme Court का एक judgment था SR Bomai case, which actually stopped many of the misuse and all. है ना? So just have an idea. Failure to have a strong and healthy opposition is calling the ruling party who perpetuates in a dictatorial manner, etc. and all. तो ये बता रहे हैं कि strong opposition party is very important. Strong opposition is important to ensure that democracy is alive. इसे सबकी बात कर रहे हैं. ठीक है. Now is giving an example and all. तो उतना डिटेल आपको अब नहीं जाना. But एक basic idea होना चाहिए what the author is talking about. Now ये है Ukraine war. I hope you are aware recently Joe Biden, the 46th president of US है ना, 46th US president recently
went on surprise visit to Ukraine. ठीक है, दैट इज व्हाट एक्चुअली इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. आपको पता होगा अभी रिसेंटली फॉरेन चले गए थे यूक्रेन, बिना बताए लोगों को, ज्यादा लोगों को पता नहीं था. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, रशिया यूक्रेन वॉर एंड ऑल. ठीक है, सो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. रिसेंटली व्हिच ट्रीटी हैज बीन सस्पेंडेड बाय रशिया? इस आर्टिकल में मेंशन्ड है. योर ऑप्शंस आर सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी. कौन सी ट्रीटी को रशिया ने भी सस्पेंड किया है? वॉशिंगटन ट्रीटी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, नन ऑफ द अबव. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, so the right answer to this question is New Start policy. So C is the right answer. In fact, मैंने कल discuss किया था. I still remember. Yes, Priya Chavan, right. 3 is the right answer. Yes, Rashmi Kant, you are talking about Article 356. You are right. Huh? President's rule and all. But a lot of misuse have also happened. Huh? Yes. इसका आंसर 3 है. New Start Treaty. So a New Start Treaty is actually a nuclear arms reduction treaty between US and Russian Federation. Russia और US के बीच का ये treaty है. But this has been recently suspended by Russia. So that is what is being talked about here. The West keeps maintain financial and military backing. So US has helped Kyiv. Kyiv मतलब Ukraine, है ना? So for means from both military point of view and financial point of view, arms वगैरह provide करके और पैसे से भी मदद किया है. So in this surprise visit to Kyiv on Monday, US President Joe Biden pledged America's lasting support to war-battered nation. तो एक्चुअली जो बाइडेन ने कहा कि हम कसम खाते हैं, मतलब प्लेज किया कि हम जो है यूक्रेन को हेल्प करेंगे एंड ऑल. एंड उसी की वजह से परहैप्स द रशिया हैज एक्चुअली डिसाइडेड टू सस्पेंड अ न्यू स्टार्ट ट्रीटी. जब रशिया ने देखा कि यूएस प्रेसिडेंट वहां पहुंचे हुए, सो परहैप्स द रशिया बिकॉज ऑफ दैट रिस्पॉन्स डिसाइडेड टू स्टॉप दिस और सस्पेंड दिस न्यू स्टार्ट ट्रीटी. थोड़ा सा पढ़िएगा प्लीज, रीड अबाउट न्यू स्टार्ट ट्रीटी आफ्टर द क्लास इज ओवर. Despite the setback, no side is ready for talks. Putin is ready to fight as long as it takes, and West is ready to arm Ukraine as long as it takes and all. ठीक है, so इसी की वो बात कर रहे हैं. ठीक है. Okay, so where exactly it is? I hope you all are aware. I mean, here is Kyiv. This is Russia. This is Ukraine, and this is Kyiv. ठीक है. Okay, yes. Now there's a question. The war between Russia and Ukraine started for which region? Your options are Nagorno-Karabakh region, Donbass region, Caucasus region, Sahel region. Your time starts now. What is the right answer? कौन सा सही जवाब है? Yes, the right answer is Donbass region. B is the right answer to this question. We have discussed many times actually. तो यहाँ पर actually this is on the eastern side of Ukraine. ये Donbass region, इसी के लिए तो मेन लड़ाई हुई थी. So this is the region for which actually the war between Russia and Ukraine started. So B is the right answer. ठीक है, Caucasus region नहीं, B. विशाल कुमार is right. ठीक है, Caucasus region यहाँ पर है. This region is called as Caucasus. So there is no war because इसकी वजह से war हुई है, Donbass की वजह से. And Caucasus is here, this way. रशियाई का पार्ट है. But there is no, war between Russia and Ukraine because of Caucasus, but because of Donbass region. Yes, Rashmikant Uja, Zoya Khan, you are right. B is the right answer. ठीक है. साहेल रीजन आपको अफ्रीका में मिलेगा. नगोर्नो काराबाख के बीच तो आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट है, इसको भी पढ़िएगा. गो एंड रीड ऑप्शन ए आल्सो. नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट, गो एंड रीड, इट रिमेन्स इन न्यूज़ अ लॉट ऑफ टाइम. डॉनबास रीजन यहाँ पे सही जवाब है. बी इज द राइट आंसर. नाउ सेकंड हाफ में लिखा इंडिया कैन बिकम अ बायोडाइवर्सिटी चैंपियन. देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बायोलॉजी मींस living and non-living. So diversity, living diversity. Living means animal and plant. So basically biodiversity means plant and animal biodiversity. है ना? So the more diverse the ecosystem is, the more stable the ecosystem is. तो जितना ज्यादा biodiversity रहेगी उतना अच्छा माना जाता है. जितने varieties of plants and animals रहेंगे वर्ल्ड में, उस ecosystem में उतना stable ecosystem माना जाता है. Yes. So a lot of international conventions and meetings happen in Montreal, which is in Switzerland, Canada, USA, France. Your time starts now. What is the right answer? Yes, Montreal में बहुत सारे conventions हुए हैं, and it is actually in Canada. So B is the right answer to this question. So here is India. Let me show. यहाँ पे है ना, और
ये वाला जैसा ना, ये कनाडा है, ये यूएस के ऊपर वाला कनाडा है, और यहाँ पर मॉन्ट्रियल पाया जाएगा. यू विल फाइंड अ सिटी मॉन्ट्रियल. You must have seen a lot of conventions have happened in Montreal. You won't believe, but let me tell you. जैसे for example एक है Montreal Protocol, very famous, है ना. Then और भी बहुत सारे, yes, B is the right answer. देखिए कितने लोगों ने आंसर किया. Yes, प्रिया, चवन, विशाल, रश्मिकांत, जोनारा, you are right. Then अभी recently Montreal में एक और मीटिंग हुई थी biodiversity से related. You can see it here. So the importance of our planet biodiversity was strongly articulated at UN Biodiversity Conference in Montreal, Canada. Okay. And 188 countries representative adopted an agreement to halt and reverse biodiversity loss by 30%. ये वाला key important है. So that was the meeting to halt and reverse biodiversity loss by 30, conserving 30% of the world's land and 30% of the world's ocean by 2030. So 30 into 30 pledge इसको कहते हैं. ठीक है, तो क्या है 30% लैंड और 30% लैंड और 30% ओशन को प्रोटेक्ट करना है बायोडाइवर्सिटी. इसकी बायोडाइवर्सिटी को टारगेट इज 2030. यस, सो दिस इज 30 by 30 टारगेट. ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, व्हाट इज 30 by 30 प्लेज? इट इज रिलेटेड विद व्हाट? क्या चीज से रिलेटेड है ये? ठीक है, सो दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट. इंडिया करंटली होस्ट 17% ऑफ द प्लैनेट पॉपुलेशन एंड 17% ऑफ ग्लोबल एरिया बायोडाइवर्सिटी. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल द टोटल पॉपुलेशन, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? सो टोटल पॉपुलेशन कितना? 8 बिलियन है, और उसका 17% आई थिंक जो भी आएगा 1.4 बिलियन के आसपास जो भी आएगा इज इन इंडिया. सो लगभग 17% आबादी में, काफी ज्यादा इंडिया का आबादी है एज अ परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. एंड 17% ऑफ बायोडाइवर्सिटी एरिया भी जो इंडिया में है. ऑफ कोर्स इंडियाज रोल इन प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन एट वर्ल्ड लेवल. ठीक है, तो इंडिया का काफी अहम रोल है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज इंडिया में काफी ज्यादा आबादी भी है 70% और 70% बायोडाइवर्सिटी भी है ना. सो दिस इज द कॉन्फ्रेंस, यूएनईपी की वेबसाइट में लिखा है. आफ्टर द क्लास इज ओवर प्लीज रीड अबाउट इट. ठीक है, सो मॉन्ट्रियल कनाडा में गवर्नमेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड केम ऑन अ न्यू सेट ऑफ गोल थ्रू 2030 का टारगेट है ना. तो इसको पढ़िएगा एंड दे हैव मेंशन्ड दीस थिंग्स. तो इसको प्लीज रीड इट आफ्टर द क्लास इज ओवर. ये वाली वेबसाइट यूएनईपी पर, यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15. देखो ये अभी दिसंबर 2022 में हुआ था, हार्डली 2 months बैक. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आफ्टर द क्लास इज ओवर प्लीज डू रीड इट. Now the author is talking in response to this call. Union budget mentioned green growth as one of the 7 saptarishis. अब देखो, अगर आपने बजट की सेशन देखा होगा हम लोग की, so there was actually, I mean, Nirmala Sitharaman talked about the finance minister of India. She talked about saptarishi. So saptarishi means, sapt means 7, है ना. So 7 priorities of union budget. So these are the 7 priorities and one of them actually talks about green growth. ठीक है, आप देख रहे हैं 7 प्रायोरिटी एरिया है, उसमें से एक ग्रीन ग्रोथ की भी बात करता है. आप देख रहे हो? यस, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो वही वो बता रहे हैं कि इसीलिए यूनियन बजट ने भी इस बात को ख्याल रखा, दिस कॉन्फ्रेंस को, एंड इट डिसाइडेड टू एक्चुअली come up with the idea of green growth in that also. ठीक है, national mission for green India aims to increase the forest cover and all. So our forest cover I think somewhere around 24-25% के आसपास है अभी, and the ideal is to be achieved is 33% होना चाहिए, है ना. So this you should be knowing it. Okay, the next is Mishti scheme is launched in budget. It is related to reduce GHG emission, focus on mangrove forest, focus on improving cattle breeds, focus on animal biodiversity. Your time starts now. सबको लाइक बटन प्रेस कर दीजिए. वी आर सीइंग ओनली 12 लाइक्स, 16 इज वाचिंग, सो सबको लाइक बटन प्रेस कर दो एवरीवन. मिश्ती स्कीम काफी फेमस हुआ था, उसको स्टार मार्क कर लीजिएगा. यस, वेरी गुड खुशी, प्रिया चवन, यू आर राइट. इट इज रिलेटेड विद मैंग्रोव फॉरेस्ट. सो एम से मैंग्रोव के लिए ये मिश्ती है ना. सो बी इज द राइट आंसर और 2 इज द राइट आंसर. प्रिया चवन, आयुष श्रीवास्तव, यू ऑल आर राइट. सो दिस वाज मेंशन एक्चुअली, वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स. हाँ, जोया खान, रश्मिकांत ओझा, यू ऑल आर राइट. एक और स्कीम इस आर्टिकल में मेंशन है, पीएम प्रणाम स्कीम व्हिच वाज डिस्कस्ड इन द बजट इज रिलेटेड विद व्हाट? कोविड वैक्सीन थर्ड शॉट, रिड्यूसिंग इनपुट ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर, पूरा लिख देते हैं इन एग्रीकल्चर, यूज ऑफ हेवी मशीन्स इन एग्रीकल्चर, नन ऑफ द अबव. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बताओ पीएम प्रणाम योजना क्या चीज से रिलेटेड है? ये सब बजट वगैरह में डिस्कस किया गया था. Yes, the right answer actually is reducing the input of synthetic fertilizer. तो यही दोनों है. देखो, एक मिश्ती स्कीम है, मिश्ती स्कीम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम्स, है ना मिश्ती स्कीम.
Yes, Priya Chavan has answered it. Zoya Khan, very good. Very good. You know the full form also. Ayush Srivastav, very good. Shashmi Khan, Zoya Khan, Vishal, you all are right. PM प्रणाम का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्यूलोरेशन ऑफ मदर अर्थ. PM प्रणाम फॉर रिड्यूसिंग इनपुट्स ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन क्रिटिकल सस्टेनिंग फॉर एग्रीकल्चर, है ना. तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं यूज करना है, मींस वी शुड बी मूविंग समवेयर टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग. इसकी कोशिश होनी चाहिए ना. बहुत ज्यादा सिंथेटिक फर्टिलाइजर नुकसानदेह होता है ना. सो सिंथेटिक फर्टिलाइजर if used a lot actually is quite harmful to human, है ना. And then another term is actually एक और है अमृत धरोहर. Can anyone tell me अमृत धरोहर is related with what? This was also discussed in budget. ठीक है, अमृत धरोहर स्कीम actually it is actually related with protecting wetlands. ठीक है, जैसे हैदरपुर वेटलैंड की बात हो रही है ना, हैदरपुर वेटलैंड, रामसार वेटलैंड एंड रामसार साइट, है ना. सो देयर इज अ रामसार कन्वेंशन फॉर दैट, है ना. ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट. ओके, यस. The future of our wetland ecosystem will depend on how we are able to sustain ecological flows through reduction in water use in key sectors such as agriculture by encouraging changes to less water intensive and all. ठीक है, तो ये बता रहे हैं वेटलैंड को प्रोटेक्ट कैसे किया सकता है. हाउ टू प्रोटेक्ट इट. द फर्स्ट थिंग इज व्हेन वी आर यूजिंग एग्रीकल्चर वी हैव टू एक्चुअली इंश्योर कि वाटर यूज एफिशिएंसी होना चाहिए. मतलब कम से कम पानी खर्च किए एग्रीकल्चर उगा दे, है ना. सो दैट इज व्हाट द आइडिया इज. सो लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप एक चीज है. दूसरी चीज है कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए. वी शुड डेवलप सच अ टेक्नोलॉजी दैट मिनिमम वाटर शुड बी यूज्ड इन एक्चुअली agriculture purpose. That is what the idea is. Second thing is we should be doing water recycling in such a way that water loss should be minimized. This is one of the way we can protect our wetlands, है ना. इसी तरह wetland को protect किया जा सकता है. Then एक चीज और है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, PM STIAC के बारे में. PM STIAC, Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council. So please go and read it. PM STIAC. ठीक है, just have an idea about it. साइड में एक आर्टिकल था, देखो कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड. देखो ये क्वेश्चन MHCT में पूछा है डायरेक्टली, है ना. कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड MHCT में शायद पूछा था, ये स्लैट पे किसी एक एग्जाम में मैंने देखा था ये पूछा था. ठीक है, इन वन ऑफ द एग्जाम दे हैड आस्क्ड, परहैप्स एज फार एज आई रिमेंबर MHCT में. हाँ, 2 फरवरी इज वर्ल्ड वेटलैंड डे. यस, जोया खान, राइट. सो दे आर सेइंग द सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू क्लैरिफाई लेटर दिस ईयर इन specifics of a carbon trading market. An amendment to Energy Conservation Act was passed. तो पहले अगर ये जब क्लैरिफाई कर दी गवर्नमेंट, देन वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल. ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर दैट क्लैरिफिकेशन, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर. तो एक होमवर्क है, देखो कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ना. सो रीड अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल इन डिटेल, इन विच ईयर इट हैपेंड, विच कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इट वाज. ठीक है, कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था, कब हुआ था, व्हाट वर द बाइंडिंग एग्रीमेंट्स इन क्योटो प्रोटोकॉल. सो व्हाट इज कार्बन क्रेडिट, व्हाट इज कार्बन ट्रेडिंग, इसको पढ़िएगा. इट्स अ होमवर्क, गो एंड रीड इट. देन एक और ओपिनियन पेश कीजिएगा. CSDS लोकनीति हेल्थ सर्वे हुआ है. सो एक्चुअली अ सर्वे हैज बीन कंडक्टेड, हाउ सैटिस्फाइड आर पीपल विद हेल्थ सर्विसेज. ठीक है, तो हेल्थ सर्विसेज आप समझते हो ना, जैसे हॉस्पिटल्स एंड ऑल. तो कितना लोग सेटिस्फाइड है, मतलब एक तरह का सर्वे हुआ था. उसको ओवरव्यू देख लेना, वो डिटेल जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज दे विल नॉट बी आस्किंग इन एग्जाम. बट एक जस्ट आइडिया कि लोग से पूछा गया आप कितना सेटिस्फाइड है प्राइमरी हेल्थ केयर से, सेकेंडरी हेल्थ केयर से, टर्शियरी हेल्थ केयर से, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड ऑल. तो वही एक सर्वे हुआ था. Why have French troops withdrawn from Burkina Faso? So Burkina Faso is a country. Where do you find in which continent? कहाँ मिलेगा आपको? Why this is a news? Because last year 2 military coup happened. दो मिलिट्री coup हुआ था यहाँ. One in January and another in October. ठीक है, 2 military coup हुआ था. Military coup, you understand? Military coup means removing actually the democratic government by the military, or military taking the charge by overthrowing the prime minister or president, है ना. So that is what it is called. तो दो हुआ था. देखो, सेकंड मिलिट्री को हुआ था, एक आई थिंक जनवरी में हुआ था, एक यहाँ हुआ था अक्टूबर के आसपास. So yes, it is in Africa. Yes, very good, Srashti Sharma. Only one answer I have got. Here is India. This is Africa. ठीक है, और वेस्ट अफ्रीका. Yes, जोया खान, very good, perfect. So here is Burkina Faso. Go and find out what is its capital. इसकी राजधानी क्या है, फाइंड आउट करो. ठीक है,
सो इसमें आर्टिकल थी व्हाई हैव फ्रेंच ट्रूप्स विथड्रॉन फ्रॉम बुर्किना फासो, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इन साहेल रीजन, तो इसी को एक्चुअली साहेल रीजन कहते हैं, ये वाला रीजन है ना, इसको साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका कहते हैं। सो बुर्किना फासो इज द पार्ट ऑफ साहेल रीजन, ठीक है। सो इसको जस्ट गो एंड रीड इट व्हाई दे हैव ड्रॉन, तो इतना डिटेल नहीं जाना, आई मीन बट एक ओवरव्यू होना चाहिए, ठीक है। सो जस्ट गो एंड हैव अ ओवरव्यू ऑफ दिस आर्टिकल। Now, this page number 10 में India China holds in-person talks after 3 years. Yes, ये काफी बड़ी न्यूज है। 3 years आप समझ रहे हो, and I think after first time after Galwan Valley clash, गलवान वैली क्लैश के बाद पहली बार जो है वो इंडिया और चाइना का इन पर्सन टॉक हो रहा है, यानी ऑनलाइन ही मतलब इन पर्सन। आप देख रहे हो ना, दोनों के ऑफिसर्स दे आर सेटिंग इट एंड टॉकिंग टू ईच अदर एंड ऑल, है ना। So their disengagement to remain actually in frictional areas and all. तो ये सब की बात हो रही है कि disengagement हो, मतलब बॉर्डर पर हालात सुधर जाए। So we have to improve the situation in border. No conflict, unnecessary conflict should happen. That is what the thing is. So we hope that everything would be fine. हाँ. Yes, Burkina Faso's capital is Ouagadougou. Yes, good. हाँ. मैंने इसलिए पूछा था Burkina Faso capital because it is very difficult to remember. Yes. So India China hold in person talks after 3 years. इसको पढ़ लीजिएगा, just go and read it. So Joint Secretary East Asia Mr. Shilpak Ambole was on the visit to China, है ना। So Chinese officials से मुलाकात की। Now German Danish visit to India. Yes, German Chancellor Mr. Olaf Scholz is actually German Chancellor. German Chancellor. There is no concept of prime minister there. There is president and chancellor, and all the powers are actually with chancellor. So German chancellor will be coming to India. ठीक है, भारत आएंगे वो। और एक और है डैनिश। डैनिश मतलब क्या होता है? People of Denmark are called as Danish. So Denmark crown prince भी आएंगे। So will be coming to actually India। लिखा ना है, देखो यहाँ पे, let me zoom it, है ना। Chancellor Olaf Scholz and the Danish crown prince travel to India for talks and all. तो ये लोग आएंगे, कुछ बातें वगैरह होगी। So when the talks will happen, if any conclusion will happen, you should be reading that, and if it comes in the newspaper, of course we'll be discussing that as well, है ना। तो कहाँ पर है देख लिया जाए। So here is actually India. Let me show you. This is India. This is Germany, and यहाँ पर है डेनमार्क, है ना। So डेनमार्क की कैपिटल क्या है? What is the capital of Germany? The capital of Germany is Berlin. Capital of Denmark is Copenhagen. ठीक है, yes. Now let's move on to the next one. Biden administration makes renewed push to name Eric Garcetti as US envoy to India. Yes, हाँ ये important है, पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी till now, right now I think there is no US ambassador to India. Envoy मतलब होता है ambassador. Ambassador समझते हो ना? I mean the head of embassy जो होता है, embassy के head में होता है ना। So Biden, I mean Joe Biden, the US president, is trying that Eric Garcetti would be the new US ambassador to India. हाँ, yes, Rashmikant, very good. Germany's capital is Berlin and Denmark's capital is Copenhagen. Good. हाँ, ठीक है. So the Biden administration is making another attempt to push through its nominee for US ambassador to India next week. तो अब देखते हैं, पहले complete हो जाए, means they are trying it, but let's when the final announcement will be done, we'll be discussing it, है ना। एक और center appoints new Drugs Controller General of India, DCGI. His name is Mr. Rajiv Singh. ठीक है. Okay, now after the class is over, please write in the comment who is the Minister of Civil Aviation. कौन है? कमेंट में लिखिएगा, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें लिखना है who is the Minister of Civil Aviation in India. एक और ये वाली आर्टिकल है, डिकिंसोनिया फॉसिल फाउंड इन भिम्बेटका। तो भिम्बेटका एक्चुअली बहुत ओल्ड केव्स है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। दिस इज मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे आपको भिम्बेटका केव मिलेगा। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग में आपको ये मिलेगी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया यू विल फाइंड, मतलब पैलियोलिथिक एज वगैरह के जमाने की। सो द फॉसिल्स हैव बीन फाउंड ऑफ एन एनिमल हेयर, ठीक है। तो उसको लोगों ने कहा है डिकिंसोनिया फॉसिल। सो दिस टर्मिनोलॉजी हैज बीन यूज्ड, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। सो इसको फाइंड आउट किया गया। सो भिम्बेटका केव्स के बारे में या भिम्बेटका रॉक पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, गो एंड रीड इट लिटिल बिट, ठीक है। एक और थी, ओनली चिल्ड्रन अबव 6 मस्ट बी एडमिटेड इन क्लास 1। पहले जो था 5 था, अब उसको बढ़ा के 6 कर दिया गया। मतलब आपका बच्चा जब 6 साल से ऊपर का है, देन ओनली शुड गेट एडमिशन इन क्लास 1, ठीक है। कई बार क्या होता है, वो छोटे बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है क्लास 1, ठीक है, एंड देन
sometimes it is very I can say painful for the child as well and all. तो ठीक है, तो पहले अर्लियर जो रूल था वो 5 था, इसको इनफैक्ट जो कोर्ट में चैलेंज वगैरह भी किया गया है, खैर ठीक है. हाँ, चाइना रशिया टाइज नॉट एम्ड एट अदर्स कंट्रीज, नॉट एम्ड एट अदर कंट्रीज. देखो एक्चुअली क्या है, चाइनीज ऑफिशियल सीसीपी फॉरेन पॉलिसी, सीसीपी मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज फॉरेन पॉलिसी चीफ विजिटेड रशिया. तो यहाँ देखो दोनों की मुलाकात हुई है ना. सो दे आर एक्चुअली आई मीन रशियन प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हुई. सो दे आर हैविंग सम टॉक्स एंड ऑल. सो इसको भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा कि आई मीन दे आर सिग्नलिंग कि वी आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम विद एनी अदर कंट्री, दिस इज आवर रिलेशन एंड ऑल. ठीक है. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram and download the BYJU'S exam prep app. Comment section में क्लास ओवर होने के बाद लिखिएगा who is the civil aviation minister of India. ठीक है. So thank you everyone. Thanks for watching. Who is civil aviation minister? Static comment में लिखना, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब नीचे लिखना. ठीक है. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.